Yeah, so you were saying. Yeah, just a thing. Yeah. So DL का डायरेक्शन कौन सा है? अपना हाथ करो उस लाइन में. Unmute yourself. Unmute yourself. Yeah. Now, can you swirl your finger towards R? किधर? किधर? R की तरफ किधर swirl किया? उल्टा कर दिया ना? हाँ. No, current is like करंट नहीं करना है. मैं DL क्रॉस R पूछ रहा हूँ तुमसे. वेक्टर A क्रॉस B का कर. How do we know that DL is inwards? इनवर्ड्स नहीं है, अपवर्ड्स है. ऐसे. हाँ. R किधर है? इधर है. दिस. फिर ऐसे करके घुमाना है तुम्हें. पहले अपना हाथ इस तरफ करो, उसको इस तरफ घुमाओ. ऐसे. अरे भाई, एक मिनट. ये A है. अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है तो A क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होगा? आता है? आता है क्या? नहीं आता. तो फिर मैं बता रहा हूँ, अभी बताया भी 3 बार. ए की तरफ पहले अपना हाथ करो, इस तरह से करो. ए की तरफ हाथ करने के हमारे पास 2 तरीके, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, राइट? इस तरह से करो जिससे तुम बी की तरफ अपने फिंगर्स को घुमा सको. समझा? उस हाथ से करो, फिर बी की तरफ घुमा सकते हो. तो जिस जिस डायरेक्शन में थंब होगा उस डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट होगा ए क्रॉस बी. ठीक है? सो z एक्सिस. अंदर z क्या होता है? मतलब दिस इज इनवर्ड्स. इनवर्ड्स इज द आंसर. If A is like this and B, and if we swirl it towards B like this, then it'll be, how will it be inwards? It'll be like this, right? Or inwards, whatever. It'll be either, na? भाई ऊपर की तरफ है. योर डायरेक्शन इज ऊपर, राइट? DL Oh. क्रॉस Yeah. R अंदर. Yeah, inwards. Yeah. Got it. हो गया? आ गया? नहीं तो DL का नहीं समझा मुझे. क्या नहीं समझा? DL का फिर क्या करेंगे? DL को ही तो लिया भाई सबसे पहले. Is DL upwards or inwards? Upwards. DL is upwards. Yeah. R is So this side. So inwards You is can this see DP. the arrow. oh yeah. Inwards. Got it. क्या हो गया? Yeah, but according to like Maxwell's corkscrew rule, in that we use it for magnetic field direction, but that we get clockwise or anti-clockwise. We don't get a specific direction. No, you get clock. No, of course. अरे clockwise, anti-clockwise कैसे होएगा? जब तुम उसको ऊपर से देखोगे ना. So if I were to take, if this is a current carrying conductor, right? This side. According to this, this is the direction of L. अभी मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है. So corkscrew rule से कैसे होएगा? ऐसे होएगा magnetic field, which is inwards only. Same ही तो है. That depends. The point is that the thumb will be where the current is. So I put like this or like this. This will remain the same, but how will we know if it's inward or outward? She's right. It only shows clockwise or anti-clockwise, right? अरे भाई कैसे? Clockwise, anti-clockwise तब समझ में आएगा जब तुम उसका टॉप व्यू लोगे या बॉटम व्यू लोगे, राइट? सामने से clockwise, anti-clockwise कैसे हो सकता है अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है तो? Yeah, obviously. I mean, yeah. Okay. No, but it you does not said tell you inward. clockwise or anti-clockwise. It tells you a direction. If this is the current, this is how the magnetic field is flowing. So if I ask you इस point पे, अभी ये इसके ये एकदम horizontal point यहाँ पे ले रहा हूँ तो किधर होगा? इस direction में होगा. अगर उसके पीछे के point पे लेता हूँ यहाँ पे तो कहाँ होगा? इस direction में होगा, right? इस point पे लूँगा तो यहाँ बाहर की तरफ होगा. So I'm getting all my directions. Clockwise, anti-clockwise क्या है? और अगर इसको तुम ये वाले बायोट सेवर्ट से भी लोगे, बायोट सेवर्ट से भी लोगे
तो दिस इज, अगर मैं ये पॉइंट पे निकालता हूँ, चलो ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो दिस इज dl क्रॉस r, so dl क्रॉस r, so I'll get it in this direction, which is what we got from corkscrew rule also, the right hand thumb rule. Is that like that corkscrew rule either in this chapter or is it there? तो 10th में पढ़ा था ना ये रूल जो मैं भी राइट हैंड थंब रूल बोला ना, कि ये डायरेक्शन में करंट है Yeah. और ये डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, हो गया। ओके, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट थ्रू एंटायर वायर, तो पूरे वायर के लिए निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि अभी तो हमको छोटा डीएल के लिए मिला था, हमको पूरे एल के लिए चाहिए, तो एल को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके कंप्लीट एल तक, ठीक है, ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। Could you scroll up to vector form 1 second? Sorry. Yeah. Done. ओके, डन। अब एक और नया करंट डेंसिटी, तो पता है क्या होता है करंट डेंसिटी? करंट अपॉन एरिया, आई अपॉन ए, राइट। तो करंट डेंसिटी के साथ ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा उसका। हालांकि ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं हुआ, but just in case समझ लो, समझ लो। It's funny. How did the A get cut? I don't understand. Which A got cut? I by A वाला A. कहाँ कट कैसे हो गया भाई? ऊपर J, ऊपर like a sort of I we put J, we put I by A, right? हाँ, फिर So दोनों जगह डीएल डीएल मल्टीप्लाई किया, फिर ए डीएल क्या बन गया? क्या हो गया भाई कावेरी? ऐसे स्ट्रेस हो जाएगा इधर बहुत सारा। ADL will become DV. हाँ, तो बन गया ना, फिर क्या प्रॉब्लम? तो DV ऊपर है, लेकिन ऊपर क्यों है DV? नीचे it's in the, it should be अरे in the भाई denominator. आईडीएल को now you can write J into DV, so instead of IDL it we wrote J into DV. Oh, like that. Got it. Where did the oh no, हाँ बोलो। I understood. No, I understood. ओके, तो नोट कर लो उसको। You said something about why is there a magnetic field when there is current present? What was you said? What did you say about that? I said that's not in your scope. It's experimental. We Yeah, it's observed not. it. We found We it. just can prove it by observing the deflection and all, right? There's no calculation. नहीं, आगे जाके तुम और बहुत पढ़ोगे फिजिक्स में, तो तुमको थोड़े और कोरिलेशंस मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। नहीं, हम आगे जाके नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मत पढ़, अभी अभी इतना ही है। आगे आगे क्यों पढ़ोगे unless and until it's helping you in something. मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी वाली कॉफी वाली। some days I just think of a question and then I put it on Instagram and I ask people to respond, and people respond very nicely with their own logic, not just physics, it could be anything. So मैं कॉफी बना रहा था, तो पहले मिल्क आता है, राइट, उसके बाद एस्प्रेसो गिर रहा है, उसके बाद तुमने देखा होगा गिरता है शुरुआत में, उसके बाद गिरते गिरते इधर ब्रेक हो जाता है,
शुरुआत में तो स्ट्रीम में गिरता है, फिर इधर जाके ऐसे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। मैंने पूछा था ऐसा क्यों होता है? पीपल आर वेरियस डिफरेंट। So I said, why does it break while coming down? So somebody said because of depression. Because the stream is ending, so then there's not much force to for the coffee to fall or whatever. So then it There's not falls much in. force, मतलब क्या भाई? Gravitational force तो constant ही है, आते आते खत्म थोड़ी होगी। Yeah, but the machine is not Producing more actively liquid for it to producing fall. Yeah. नहीं, I'm not asking this question to you guys. I can ask, but फिर हम ये पढ़ नहीं You पढ़। know the answer, sir. Of course I know the answer. And what is the answer? So then what This is the answer? हाँ? What is the answer? नहीं, पहले तुम खुद ही figure out करना, पहले देखना उसको। चलो मैं ऐसे ही दिखाता बोला हूँ। अभी हाँ? अभी जो बोला We tried, no, that's our answer. V कहाँ से? कावेरी ट्राई भाई। Your same answer. Same कहाँ से? There's no other possible reasoning to it. Of course there is. First of all, that's a wrong answer. So there's clearly other possible reasoning for it. you're saying at the end only, right? When it's about to stop, then it falls. Yeah, after some time it breaks. So what you said is that force आते आते कम हो जाता है. So वो conceptually wrong है, because force तो gravitational force है, वो कम तो नहीं होता, उस mass पे depend करता है gravitation. Gravitational force तो same रहेगा, उतना समझा, उतना पता है, लेकिन the machine is not actively producing it to fall, right? After a point it has to, the same with नहीं, वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है ऊपर। तो जिस टाइम पे मैंने वो वीडियो लिया था, ऊपर से गिर रहा है, जो भी एस्प्रेसो है वो गिर रहा है कंटिन्यूअसली, बट गिरते गिरते नीचे आते आते वो ड्रॉप बन जाए। इसलिए मैं दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, सिंस यू आर इंटरेस्टेड, लेट मी पॉज दिस वीडियो सो दैट वी डोंट। I thought you meant रिकॉर्डिंग ये हमने लिख लिया था अभी। तो ये बायोट-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, ऐसे करके हेडिंग लिख के ये लिख लो। फिर लिखो बायोट-सेवर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी, ये लिख लो। Sorry, sir. One more question. Even if the stream is thin, no matter how thin it will be, why would it fall in drops? Why would it be discontinuous, even if it's thin? Okay, that's because of surface tension. So that's because of surface tension. So when it becomes very very thin, देखा होगा ना, फ्लूइड में होता है कई बार बहुत ही छोटा, अगर बहुत ही थिन कर दोगे तो फिर वो अपने अपने स्फेरिकल बॉल्स में डिवाइड हो जाते हैं. Yeah. But how surface tension? Huh? Surface tension. How surface tension? What is surface tension? Like I don't know how. So don't say how surface tension. Say what surface tension. It's a surface tension on some surface. हाँ तो ये लिक्विड का सरफेस ही है ना. So जब लिक्विड का सरफेस होता है तो एक सरफेस टेंशन नाम की चीज आती है. क्यों आती है? क्योंकि लिक्विड अपने अपने जो उनके मॉलिक्यूल्स है अंदर, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं. ठीक है. प्लस लिक्विड का जो बाजू वाले जिस दूसरे मीडियम के साथ वो कांटेक्ट में, उसके साथ एक अडेसिव फोर्स है. जैसे इसमें डाला गया, जैसे इसमें हमने डाला, हाँ समझा. तो इसके एज पे या तो बल्ज ऊपर होगा नीचे होगा, वो डिपेंड करेगा कि फोर्स कैसा लग रहा है, उनके बीच का अडेसिव फोर्स अपने खुद के मॉलिक्यूल और इसके बीच में. राइट. तो जब बहुत ही थिन हो जाता है तो इसलिए वो स्फेरिकल बन जाते हैं, क्योंकि उनका अपने बीच का अट्रैक्शन इतना रहता है कि उनको ऑप्टिमल शेप वही रहता है लोएस्ट एनर्जी का. तुम भी ऐसे सोते होगे, तुमको ठंड लगती होगी तो तुम ऐसे स्फेरिकल बन जाते हो. That's not surface tension, by the way. But it's still it makes sense. Yeah, but that's because you have the lowest exposure area. That's why you do that. Which in turn is the same concept in surface tension.
Okay, done. Sia, where are you? अरे तुम्हारा वो वाला लड़का कैसा है? क्या किया उसने? कुछ He's इन्वेंट still किया? writing some such papers. Cool. Biot-Savart law in terms of magnetizing force or magnetizing intensity H. ये नोट कर लो सिर्फ इतना पार्ट. DH equals to dB by mu naught. सिर्फ इतना. Magnetizing intensity is the same as the intensity of the magnetic field. No, intensity of magnetic field is dB. What is magnetizing? ये लिखा तो है DH equals to dB by mu naught. हो गया? Does that much? dB by mu naught? Yeah. Yeah. So that you know this term. See, frankly, these are not to be used anytime. I don't even remember this term magnetizing intensity. But exam में अगर कोई सवाल आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए. ठीक है? Biot-Savart law के feature. What is the difference? What is the difference between intensity of the magnetic field and magnetizing intensity? अरे यही तो difference है भाई. That DH equals to dB by mu. Not in terms of formula, like. But it's a parameter. It's a calculation parameter. यहाँ पे, for example, dB is for dB includes the permeability of the medium. DH is dB per permeability of the medium. How can something be per permeability? How can it not? You can just divide by R square also and create a parameter, na? It's a Yeah, but it quantifiable has to parameter. logically. But it is logical. अगर हमको DH पता है तो अब हम उसका dB निकालने के लिए उसकी permeability से multiply कर देंगे बस. अगर हमको किसी चीज का DH पता है, dB तो specific to that material ही होगा ना. Okay, but isn't it? But then it's the same, right, as the magnetic like field. Mu naught is the permeability of vacuum. किसी और Yeah. medium पे डालोगे तो कुछ और होगा, mu r होगा. That is fine. How is it fine? So dB there would be different and dB in vacuum would be different. But DH would be same. It is like इसका density same होगा लेकिन दोनों का मास अलग अलग होगा ना, because volume अलग अलग है. चलो आगे बढ़ो. The direction of dB is perpendicular to both IDL and R, of course, because it's DL cross R, right? It's a cross product. तो दोनों के perpendicular होगा dB. Right hand thumb rule, okay. Theta is 0, then फिर से 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा अपना Zoom. वापस आया. So dB will be 0 because ideal sin theta, right? तो sin theta is 0. तो अगर theta 0 है, angle 0 है तो 0 होगा. Theta 90 है तो maximum होगा. Theta 180 है तो भी 0 होगा. ओके? ये बकवास है. Permittivity and permeability. ये लो, relationship भी लिख लो. The relation between epsilon naught and mu naught is always a constant. Will they ask this? Is this important? But it's simple, na? लिख लो. See, mu naught into E naught is 1 by C square. ये. Which is interesting. Right? Why is it interesting? You have to write the whole relation, only the last.
ओनली द लास्ट लिख लो, बट म्यू नॉट इंटू ई नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन लाइट की स्पीड का स्क्वायर. इट्स इंटरेस्टिंग ना. Oh yeah. ठीक है, लिख लिया. Yeah. ठीक है, मुझे बताओ म्यू नॉट का वैल्यू कितना है, या म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना है. हाँ, 1 into 10 raised to -7. 10 to the power -7. ठीक है. और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 into 10 I raised need to. to take this to 9. क्या. ओके, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे. एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. What जैसे is कि the heading? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. या चलो ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं बैंड्रा में. When? Whenever we will meet once a month type. Okay. Preferably weekend. या वीकेंड ओनली. वीकेंड ही हो भाई. I reach home by 3 from my school. On weekend. Monday to Friday. Yeah, That's weekend it. only. We'll do it in the morning. You can come along with me only. Okay. We'll go. We'll see each other. I've never seen you guys except for CIES. Yeah, were you in online batch or offline? Online. So then 10th I've was not full seen any of online. you except for Smera. So we can meet. But like, would that be in addition to the 3 classes of a week? Depends. वो उस टाइम पे हम डाउट सेशंस ले सकते हैं जब भी नीड बेस्ड होगा. मतलब आई एम नॉट सेइंग अब भी करना है, हम कभी मिल सकते हैं. नाउ दैट थिंग्स आर ओके. Do we have to draw the diagram too? हाँ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट. एनीवे, अभी तो तुमको सिर्फ टाइटल लिखना था, फिर मैं समझाता हूँ. अभी मैंने क्या बोला था, उसको तुम डिफाइन कर सकते हो. एक पॉइंट को डिफाइन करना ना मल्टीपल तरीके से कर सकते हो. तो यहाँ पे हमने कैसे पॉइंट को डिफाइन किया. एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके लिए हमको एक पॉइंट पकड़ना है. तो सबसे हम पहले कहेंगे कि भाई आर डिस्टेंस पे है वो, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है यहाँ से. ठीक है, ये तो उसका डिस्टेंस हो गया. अब यहाँ पे तो कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है आर डिस्टेंस पे, राइट. तो हमने ये पॉइंट पकड़ा जहाँ पे ऊपर वाले एंड से वो अल्फा बना रहा है, नीचे वाले एंड से वो बीटा बना रहा है. तो अब हमने एक जीरो डाउन कर दिया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट. राइट, रॉन्ग, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी इनफाइनाइट हो सकता है. इट विल क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ सर्कल अराउंड द कंडक्टर, राइट है कि नहीं. How can a point be a circle? अरे इट्स नॉट अ पॉइंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इट इज अ सो ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ से मैंने आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पकड़ा. अब ये कह रहा है कि ये अल्फा बना रहा है, ये बीटा बना रहा है. तो ये वाला पॉइंट भी उतना ही बनाएगा, ये वाला पॉइंट भी उतना ही बनाएगा, ये वाला पॉइंट भी, राइट. It will be the same for all these points, right? हाँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो हर पॉइंट पे सेम ही होगी क्योंकि वो आर डिस्टेंस पे. तो हमको सिर्फ फिगर आउट करना है कितनी होगी, राइट. ठीक है, ओके, क्लियर. तो इतनी होती है, लिख लो इसको. इसको अभी हम डिराइव करेंगे. इसमें हम लोग करंट एलिमेंट नहीं लेंगे. लेंगे ना, बायोट सेवर्ट लॉ से इसको हम डिराइव करेंगे.
डन, लिख लिया. म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन आर, या म्यू नॉट बाय 4 पाई आर इंटू आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ठीक है, अब इसको डिराइव कैसे करें? ये सब इसके अलग अलग केसेस हैं. अगर अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हैं पाई बाय 2 के, पाई बाय 2 मतलब 90. 90. साइन अल्फा भी 1 हो गया, साइन बीटा भी 1 हो गया. ये कब हो सकता है? दोनों कब होंगे? 90 कब होंगे अल्फा और बीटा दोनों? When they are at 180, like they're on the same. Basically, तब there's no होंगे जब ये, angle. वो तब होंगे जब ये जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना. ये बढ़ते जाएगा अल्फा, अल्फा टेंडिंग टू 90 हो जाएगा, बीटा भी टेंडिंग टू 90 हो जाएगा, राइट. उस केस में ये हो जाएगा, है ना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई. ये भी लिखो. Wait, sir, 1 second. Done. ओके, चलो अभी फॉर्मूला है तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, बाद में डिराइव करते हैं. करो. करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट in a long wire kept horizontally in the east-west direction. Find the magnitude and direction of magnetic field in a horizontal plane at a distance of 10